रक्षा प्रदर्शनी का मूल विषय पाथ टू प्राइड यानी गर्व पथ है, जो हमें आजादी के अमृतकाल की प्रेरणा देता है। इस ऑपडेमो में भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, थल सेना, भारतीय तटरक्षक एवं डीआरडीओ हिस्सा ले रहे हैं। દિલમાં જનૂન, આંખોમાં દેશભક્તિની ચમક રાખું છું. દુશ્મનનો જીવ નીકળી જાય, અવાજમાં એટલો દમ રાખું છું. નમસ્તે અમદાવાદ, કેમ છો? રક્ષા પ્રદર્શનની 12મી આવૃત્તિમાં હું સંધ્યા ડેવિડ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. ગુજરાત રાજ્યનું અમદાવાદ શહેર ઐતિહાસિક, રાજકીય, સાહિત્ય અને કળાની દ્રષ્ટિએ આગવું સ્થાન ધરાવે છે. આજે અમદાવાદ શહેર વધુ એક ઐતિહાસિક કાર્યક્રમનું સાક્ષી બનવા જઈ રહ્યું છે અને એ છે ડિફેન્સ એક્સપો 2022. ડિફેન્સ એક્સપોનો મુખ્ય હેતુ રક્ષા ઉત્પાદન ક્ષેત્રે ભારતીય સંરક્ષણ ઉદ્યોગોની સંભવિતતાને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. તમે આજે અહીં ભારતીય નૌસેના, ભારતીય વાયુસેના, ભારતીય થલ સેના, ભારતીય તટરક્ષક તેમજ ડીઆરડીઓ દ્વારા કેટલીક રોમાંચક કામગીરીઓ, ભવિષ્યવાદી તકનીકો અને ક્ષમતા પ્રદર્શન જોવા જઈ રહ્યા છો.
सागर में भारत का प्रभुत्व सर्वविदित है। आज का यह ऑफ डेमो उभरती नई तकनीक के साथ युद्ध के कुछ रण कौशल का भी प्रदर्शन करेगा। इसका उद्देश्य न केवल सैन्य विधियों से परिचय कराना होगा, परंतु इसमें सभी को भागीदार बनाते हुए राष्ट्र की शक्ति एवं सुरक्षा के आयामों को सुदृढ़ करना होगा। आज का कार्यक्रम 4:55 से प्रारंभ होकर 6:30 पर समाप्त होगा। ऑफ डेमो की शुरुआत कॉम्बैट फ्री फॉल से होगी, जिसमें भारतीय नौसेना का मोटो तैत्रीय उपनिषद की एक
of special forces into the enemy area by air using highly maneuverable parachutes. In this challenging evolution, special forces personnel get airdropped from a height of up to 36,000 feet, travel under canopy with combat load, and land with accuracy onto the given target. This method is used against heavily guarded enemy areas where land penetration is impossible, or at sea where the commandos jump along with airdroppable rigid hull inflatable boats to neutralize marine elements such as pirates and narcotic mafia. कॉम्बैट फ्री फॉल अर्थात युद्धकालीन अवतरण एक तरीका है जिससे हमारे स्पेशल फोर्सेस के जवान दुश्मन के इलाके में प्रवेश करते हैं। इस प्रक्रिया में स्पेशल फोर्सेस के जवान 36,000 फीट तक की ऊंचाई से वायुयान द्वारा अवतरित किए जा सकते हैं। अस्त्र शस्त्रों से सज्जित ये जवान पैराशूट की मदद से अपने लक्ष्य पर सटीक उतरते हैं। यह प्रक्रिया दुश्मन के उन इलाकों में अपनाई जाती है जहां जमीन से प्रवेश कर पाना कठिन हो अथवा समुद्र में जहां रबड़ की नौका भी उतारी जा सकती हो, जिससे कि किसी भी दुश्मन, पायरेट या ड्रग माफिया को पकड़ा जा सके। દર્શક મિત્રો, તમારું ધ્યાન હું આકાશ તરફ ખેંચીશ. તમે આપણા કમાન્ડોને પેરાશૂટ દ્વારા નીચે ઉતરતા જોઈ રહ્યા હશો. કોમ્બેટ ફ્રી ફોલ એ અત્યંત દાવપેચ કરી શકાય તેવા પેરાશૂટનો ઉપયોગ કરીને હવા દ્વારા દુશ્મનના વિસ્તારમાં વિશેષ દળોને દાખલ કરવાની એક પદ્ધતિ છે. સ્પેશિયલ ફોર્સના જવાનોને 36,000 ફૂટની ઊંચાઈથી હવામાં છોડવામાં આવતા હોય છે. તેઓ લડાયક હથિયારના ભાર સાથે કેનોપી હેઠળ મુસાફરી કરતા હોય છે અને તેમને આપેલ લક્ષ્ય પર ચોક્કસ જમીન મળે છે જ્યાં તેઓ ઉતરે છે. As you look above to the left-hand side, you can see Marine Commandos of the Indian Navy, Garuds of Indian Air Force, and Para-Special Forces Commandos of Indian Army performing the combat freefall. They have jumped from the Indian Air Force helicopter Mi-17 from a height of 8,000 feet and will be landing on the ground behind you. Captain of the aircraft is Squadron Leader Ankit Jain of Indian Air Force, and the CFF team today is led by Wing Commander Dora of Indian Air Force and Mahesh Petty Officer of Indian Navy Marcos. दर्शकों, ऊपर की तरफ आकाश में नजरें गड़ा कर रखिए। इस समय भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो, भारतीय वायुसेना के गरुड़ और थल सेना के पैरा एसएफ कमांडो वायुसेना के हेलीकॉप्टर Mi-17 से 8,000 फीट की ऊंचाई से कूदकर आपके ऊपर लहरा रहे हैं। ये सभी मुख्य मंच के पीछे के मैदान में अवतरण करेंगे। इसमें कूदने वाले पैराट्रूपर्स हैं महेश कुमार पेटी ऑफिसर, प्रफुल्ल त्रिपाठी पेटी ऑफिसर, रविंदर मलिक पेटी ऑफिसर, पीयूष भारती LAM, N सिंह वारंट ऑफिसर, NK नरेश भानु जूनियर वारंट ऑफिसर, भानु प्रताप नायब सूबेदार।
रहे हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज विश्व के पटल पर भारतवर्ष रक्षा उपकरणों के विकास एवं उत्पादन के केंद्र के रूप में उभर रहा है। अगली कड़ी में आप डीआरडीओ के प्रयासों से बने कुछ नए स्वचालित उपकरण देखेंगे। यह प्रयास आधुनिकता और आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को पूर्णतः चरितार्थ करता है। Ladies and gentlemen, in a few minutes, approaching from your right side will be the fast-moving autonomous weaponized surface vehicle developed by DRDO. This surface vehicle is fitted with a 7.62 mm gun. This boat can be used for coastal surveillance to track and engage the target in an offensive role. Powered by a 75 horsepower outboard motor for propulsion, this boat can be operated from a specially designed ground control station. The live stream from this platform is made available to the controller at a mobile location. With an endurance of 8 hours, this boat can be remotely operated up to a range of 5 kilometers. The system will enhance the coastal defense of the country, providing increased deterrence to coastal threats. મિત્રો તમે અહીં DRDO દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલી માનવરહિત અને હથિયારબંધ નૌકાઓ જોઈ રહ્યા છો। તમારા સામેથી પસાર થતી પ્રથમ બોટમાં આગળની તરફ 7.62 mm ગન લગાડી છે। આ બોટ સ્વયં સંચાલિત છે અને તેને ગ્રાઉન્ડ લેવલથી કંટ્રોલ કરી શકાય છે। આ બોટ વિશાળ દરિયાકાંઠાની સુરક્ષા અને સર્ચ ઓપરેશનમાં ખૂબ ઉપયોગી છે। Coming up next is the weapon-mounted surface vehicle for inland water application. This autonomous boat, approaching steadily, is based on a composite hull and powered by 40 horsepower outboard motor. Designed for deployment in inland water bodies like lakes and rivers in an offensive role,
The boat is fitted with a twin-axis gun mount on the bow with a provision to carry a light machine gun. दूसरी नौका स्वचालित सशस्त्र नौका है जिसका विकास अंतर्देशीय सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए किया जा रहा है। लाइट मशीन गन से युक्त यह नौका झीलों, नदियों आदि में सुरक्षा की भूमिका निभाने के लिए उपयुक्त है। ये सभी स्वचालित नौकाएं एक पोर्टेबल रिमोट कंट्रोल से संचालित की जा रही हैं। यह कंट्रोल स्टेशन कहीं भी आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है। Sailing past now in front of you is a twin-hull catamaran boat. In line with the vision of Atmanirbhar Bharat, it has been fitted with indigenously developed sonar for mine detection and generation of detailed underwater bed profile. It is capable of autonomous operations for a duration of 6 hours. Ladies and gentlemen, the twin-hull catamaran boat sailing past. દર્શક મિત્રો, તમારા સામેથી પસાર થતી ત્રીજા નંબરની બોટ કેટામરન બોટ છે. આ બોટ આપણને પાણીના અંદરનું તાપમાન બતાવવામાં ઉપયોગી છે. ગ્રાઉન્ડ લેવલથી આ બોટને રિમોટ દ્વારા કંટ્રોલ કરી શકાય છે. આ બોટ પર આત્મનિર્ભર ભારત દ્વારા બનાવવામાં આવેલું સોનાર લગાવેલું છે, જેનાથી આપણને તે પાણીના અંદરની માહિતી આપે છે. તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો. On the screen was the feed from Chittar M1, which is an underwater imaging acoustic system. And now, ladies and gentlemen, I would like to invite your attention to the floating platform near the jetty to your left, as displayed on the screen to your right. The portable diver detection sonar is being deployed from this platform into water. PDDS is a portable sonar system capable of detecting potential underwater threats like divers and diver delivery vehicles in shallow waters. देवी और सज्जनों, अब मैं आपका ध्यान मंच के बाईं ओर तैर रहे एक पीले रंग के यंत्र की तरफ ले जाना चाहूंगा। यह पोर्टेबल डाइवर डिटेक्शन सोनार है जो हमारे सुरक्षा घेरे में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण का पता लगा सकता है। ऑपरेटर अपनी स्क्रीन पर इस यंत्र के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ सोनार पिक्चर उस जगह के मानचित्र के साथ देख सकते हैं। यह यंत्र सुरक्षा घेरे में प्रवेश कर रहे डाइवर का पता लगाकर संचालन कर रही टीम को तुरंत सूचित करता है। इसे अपनी जहाज के पास या हार्बर में 24 घंटे निगरानी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। With the ongoing trends in defense sector, the world is recognizing India as an emerging defense innovation and manufacturing hub. Ladies and gentlemen, what we have been witnessing thus far are the astounding capabilities of various unmanned autonomous systems, which shall be an important part of all future operations. The display of these unmanned assets highlight the aim of modernization through indigenization in the true spirit of Atmanirbhar Bharat. देवी और सज्जनों, पहली बोट वापस मंच के सामने आती हुई। यह डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई स्वचालित सशस्त्र नौका है। इसमें 7.62 mm मीडियम मशीन गन लगी है। यह नौका रिमोट कंट्रोल से संचालित की जा रही है। इसका उपयोग तट की निगरानी या किसी लक्ष्य के भेदन के लिए किया जा सकता है। ऊपर लगे कैमरे से लाइव वीडियो कंट्रोल रूम में संचालन कर रही टीम को मिलता रहता है। 8 घंटे लगातार चलते रह सकने